Hey all, this is Vinay Singh from vishAcademy.com, and in this video I will tell you how to use the Sketch app in your Windows machine. And इसके लिए हमारे पास है 3 solutions. Well, first of all, अगर आपको नहीं पता कि what is Sketch app, तो Sketch app जो एक बहुत पॉपुलर ऐप है Mac OS के लिए, जिसका यूज किया जाता है UI UX डिजाइनिंग के लिए. So what are these 3 solutions जिसके थ्रू आप अपने Windows मशीन में Mac यूज कर सकते हैं? Let's see them now. Number 1 solution, you can install the virtual Mac, means you can install the virtual machine using Oracle VirtualBox or VMware, and then you can install the Mac OS in your Windows system, and then you can start to use the Sketch app by installing it. Okay, so अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप है जिसमें एटलीस्ट 8 GB रैम है, एक ग्राफिक कार्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एटलीस्ट 40 GB फ्री स्पेस है, तो आप सिस्टम में एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं. उस वर्चुअल मशीन में मैक ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उस मैक ओएस में स्केच ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द स्केच ऐप इन विंडोज. नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट नंबर 2, एंड दिस इज द डुअल ओएस. एक लैपटॉप में 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं एंड उन्हें यूज किया जा सकता है. एक समय में आप एक ही यूज कर सकते हैं इन दिस केस, बट यस इट इज पॉसिबल. सो आप अपने विंडोज मशीन में हैकिंटोश इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन you can start to use the Sketch app in your Windows machine. Okay, but these solutions are not perfectly legal, but the number 3 is totally legal, easy. इसमें ज़्यादा technical requirement की ज़रूरत नहीं है, technical knowledge की ज़रूरत नहीं है, and it is very simple. So what is number 3? The number 3 is lunacy app in Windows. iconet.com ने एक ऐप रेडी की है which is lunacy, जो स्केच ऐप की तरह है. इसे स्केच फॉर विंडोज भी कहा जाता है. इसमें आप स्केच की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड स्केच फाइल्स सेव कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन इंस्टॉल इट. दिस इज फ्री, दिस इज इजी एंड दिस इज स्मॉल. ओके, सो द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. You can go to the links, you can try the lunacy app and you can use the sketch app in Windows easily. Okay guys, so तीनों सॉल्यूशंस है जिसमें थर्ड वाला है जो बहुत इजी है एंड मोस्ट प्रिफर्ड है. एंड अगर आपको हाई टेक्निकल नॉलेज है या फिर आपको थोड़े से हैकिंग क्रैकिंग ट्विकिंग पसंद है तो यू कैन ट्राई दी हैकिंटोश इन द वर्चुअल मशीन्स. सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. डोंट फॉरगेट टू मेंशन कैसा लगा है वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन, हैप्पी कोडिंग.